Good morning, all of you. Welcome you all on this platform of StudyIQ PC channel. I hope I am audible as well as slides are visible. Good morning, pranam all of you. All okay? Audio is fine. Please confirm so that we can start. Today is 27th November and we'll discuss about the national international news. Okay, so let's start. The first thing, judicial appointment. Second, first president to address Odisha Assembly. Euthanasia, 2030 Commonwealth Games, MSP Law, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, rare earth magnets. Let's see. Judicial appointment will consider plea to revive National Judicial Appointment Commission and Collegium System of Judicial Appointments CJI, Chief Justice of India. A fresh plea has been mentioned before the Supreme Court seeking revival of the National Judicial Appointment Commission and the setting aside the 2015 judgment that struck it down. CJI Suryakant orally stated that the court may consider listing the plea. A National Judicial Appointment Commission जोटाकू 2015 इंट्रोड्यूस करा जाइतला in the parliament and parliament was passed it and this National Judicial Appointment Commission would be the agency जे कि आपनकर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर को एक्सपेडाइट करिथांदा एंड अथॉरिटी जोटा कि अपॉइंटमेंट देई पारिथांदा. However, the Supreme Court rejected this National Judicial Appointment Commission on the ground that it violates independence of judiciary. It violates independence of judiciary. As a result, जो original जिनस ये collegium system अच्छी आज भी से collegium system अपनकर function करूची. Okay, see context रे नहीं की सूर्यकांत को ही collegium system देखिए an evolved judicial innovation from the second judge case 1993 and third judge case 1998. It's not a constitutional innovation. It's not a constitutional development. It's a judicial innovation. Judiciary निजे ही develop करी collegium system को. Okay. Judges of the Supreme Court and High Courts are appointed by the President in consultation with the collegium of the senior judges. Senior judges मनंग सहित ही consultation रही collegium system को ही activate करा जाऊँची senior judges. Collegium system for Supreme Court, collegium system for High Court is different. Here CJI had 4 senior most judges. Here again CJI had 2 senior most judges of the Supreme Court. Criticism अच्छी criticism कौन पाई अच्छी ना opaque and decision making. को ground रे there are minimum criteria. I think you know this. But को ground रे गोटे particular judge को select करा जाऊँची over others. That decision is not transparent. Lack of accountability as well. Allegation of nepotism and favoritism. No formal criteria for merit or diversity. So lack of accountability in the sense अपने जानते हैं judicial accountability is in stake. Specifically जो justice वर्मा को केस रे में देखी थी तापर judicial accountability को नहीं की question आसुची. Since judicial accountability is in stake, so constitutional morality is also at its stake. So सीधे पाई collegium system जेहेतु उटा opaque system operate करूची सेटा को हमें lack of transparency और सेटा को हमें judicial dynasty बोली भी कहूचु. केवल सही माने judiciary को promote होउचंदी जो मानकर family background अच्छी. I mean 95% of the cases family रे की judge थी वे judgeship करी थी वे तो सही माने को नहीं की तो सी जिनसो सिट में क्या जोची it's nepotism and favoritism. It's a kind of oligarchy, right? So the National Judicial Appointment Commission जो देखिए में 99th Constitutional Amendment Act 2014 and NJAC Act 2014 sought to give executive an equal role in the appointment. Appointment रे equal role कहाँ रहेगा executive रे रहेगा. तार composition कौन थला CJI the chairperson, 2 senior most Supreme Court judges,
to law minister and to eminent person. These are the this was the composition of the appointment commission. 2015, the Supreme Court struck it down 4:1, citing judicial independence as part of the basic structure. Presence of executive and eminent person deemed a threat to the independence, so collegium system automatically revived. ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯେ ଆମର ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଜ୍ ନାଗରତ୍ନା, ସେ ନାଗରତ୍ନା ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପାଞ୍ଚୋଲିଙ୍କ କେସ୍ରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଡିସେଣ୍ଟ रेज करते। वॉइस ऑफ डिसेंट कहीं रेज करते ना जो जज को जज पांचोली को जो जस्टिस पांचोली को सुप्रीम कोर्ट को एलिवेट करागला से ऑल इंडिया लेवल 57th सीनियर मोस्ट थे। पूर्वर ऑलरेडी 56 टा जज थे जो मैंने अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट रे ही पारि था। बट एन व्हाट ग्राउंड जस्टिस पांचोली वाज एलिवेटेड से जिनस भी वी डू नॉट नो। से देखिए तो गवाई तंकर जो लास्ट स्पीच देइथिले when he was outgoing Supreme Court Chief Justice of India से जाऊले से कही कि जस्टिस पांचोली केस was not I mean if would have been any kind of confusion doubt तबे बाकी जजेस माने भी वॉइस रेज करी थांदे एंड जस्टिस नागरत्न जी महिला जज अच्छी से वॉइस रेज करी न थांदे तो एटलिस्ट ए केस तो आम जानी पार न था। सो 57 सीनियर मोस्ट कहीं प्रमोट करागला और भी कॉम्पिटेंट जज थे 56 सीनियर मोस्ट जजेस भी थे। तेणु से कहुच्छी इट शोज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड व्हाट ग्राउंड ए पर्टिकुलर पर्सन इज प्रमोटेड टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील या हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस लॉ ऑफ दिस कंट्री। तेणु ये सब क्राइटेरिया को लेकिन बर्तमान डिसाइड करा जानते कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज कर। सो जस्टिस सूर्यकांत गोटे हिंट देइछन्ती विल लुक इनटू इट एंड विल डेफिनेटली रिवाइव इट। ओके, नेक्स्ट हूँ फर्स्ट प्रेसिडेंट टू एड्रेस ओडिशा असेंबली। President Draupadi Murmu will address Odisha Legislative Assembly on Thursday. This will be the first ever instance an incumbent president in office रे रहिबा समय रे incumbent president माने already president अछंती of India addressing Odisha Assembly since its formation. The president was earlier a member of the Odisha Assembly and had served as a minister as well. किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अच्छी कि आंसर हो नो, देयर इज नो सच कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। आर्टिकल 87 कहूँ प्रेसिडेंट फर्स्ट सेशन पार्लियामेंट एड्रेस करते बट असेंबली रे एड्रेस कर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल अच्छी कि आंसर हो नो। एड्रेसेस टू ए स्टेट लेजिस्लेचर बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। तब यहाँ कौन दिस इज सिंबलिक, ceremonial and historically significant. That's it. Next देखिबा euthanasia. Euthanasia is related to your GS paper 4 ethics paper रे को आपण यूज करि परिबे। Now what is this euthanasia? Euthanasia is if a person is suffering from a particular ailment or disease and there is no chance of recovery, that means that person is in bedridden or it to complete vegetative state. That means life support system रे ही से person अच्छी आज की 5 वर्ष 10 वर्ष ये टाइप रो। So in that बहुत केस रे आपण देखिबे brain dead ही जाए, the person is in coma like condition, on the person is in kind of ailment and person is suffering, person's life is painful, सेटू से recover करी परनी। तो से केस रे family member can consider, yes, family member can consider to go for this euthanasia. And euthanasia कौन हुए ना जो life support system अच्छी that is generally withdrawn. Okay, सेटा को withdrawn कर दिया जाए। राइट, क्वेश्चन कौन आसुची? क्वेश्चन होची ethical question कहीं आसुची ना simply हमें कौन करूचे हमरो will हमरो इच्छा अच्छी wish अच्छी हमरो ओके versus अपना जो मेडिकल एथिक्स कहते कि आप लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ करने दैट इज हैविंग दिस डिबेट। ओके, तो ठीक अच्छे गोटे एंड रे हूँ से लोक को आम
पेन रू मुक्ति करवा आउ गोटे एटर हूँ कि मेडिकल एथिक्स आमको से सपोर्ट करनी टू विड्र द लाइफ सपोर्ट सिस्टम तेणु से यहाँ गोटे काइंड ऑफ ए एथिकल डायलेमा बोली आपणकर कहींपारे आप इट्स काइंड ऑफ एन एथिकल डायलेमा कि कोटा करवा उचित ओके लेट्स सी सुप्रीम कोर्ट बेंच जस्टिस जेवी पार्डीवाला and KV Viswanathan case plea by father of 31-year-old Harish Rana who has been in vegetative state for 10 plus years. Supreme Court direction Noida District Hospital must constitute a primary medical board to examine whether life-sustaining treatment may be withheld. Board report to be submitted within 2 weeks. तो जो नोएडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छी ताकू प्राइमरी मेडिकल बोर्ड को रेफर करा जाइए डायरेक्शन दिया जाइए कि 2 सप्ताह भितर आमको कह कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को विड्रॉ करा जाई परिबो ना नहीं. The court noted that patient's condition has gone from bad to worse. This is the second petition in 2 years by the parents seeking passive euthanasia. Passive euthanasia and active euthanasia. Active euthanasia होची आपण ताको सडन डेथ दे देले. Suppose एमते गोटे इंजेक्शन दे देबे से तार मरियाला. Passive euthanasia means what? Gradually you started withdrawing the life support. Legal concept passive euthanasia, withdrawal or withholding of life sustaining treatment to allow natural death. Aruna Sandberg judgment, Supreme Court allowed passive euthanasia under strict safeguard, required High Court approval, a medical board and best interest test. So it's legal, approval can be given but with the strict observation or this permission. Common Cause versus Union of India 2018 recognize right to die with dignity as a part of Article 21. Right to die with dignity as a part of Article 21 legalized passive euthanasia nationwide, recognized validity of advance directives and leaving wills. Okay. Supreme Court modification January 2023 and 24 simplified the procedure for passive euthanasia medical boards at hospital and district level, reduced bureaucratic layer, faster approvals for terminal and irreversible conditions. ये होची आपनकर सुप्रीम कोर्ट रो मॉडिफिकेशन जजमेंट फाइनल जजमेंट जोटा कहबा कि प्रोसीजर ऑफ पैसिव यूथनेशिया मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द मेडिकल बोर्ड्स द हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल. ब्यूरोक्रेटिक लेयर को कम कर दिया जीवो कारण काफी डिले हुए प्रोसेस ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस रे एंड फास्टर अप्रूवल. नेक्स्ट देखिबा Ahmedabad formally named 2030 Commonwealth Game host. Ahmedabad has been selected to host 2030 Commonwealth Games, marking 100 years of the event. Announcement made by the Commonwealth Sports from Glasgow after the General Assembly ratified Executive Board's recommendation. Ahmedabad को प्रिफर कहा अगेंस्ट करागला अबुजा नाइजेरिया एवं 2010 रे लास्ट हमर कॉमनवेल्थ गेम हेतला तापर ये होची प्रथम थर पे आफ्टर 15 इयर्स ऑलमोस्ट 20 इयर्स इन फैक्ट. सिग्निफिकेंस कोन द 2036 रे इंडिया चाहूची ओलंपिक गेम को होस्ट करिबा पे. So that will kind of a demonstration for this large scale game. Positions Ahmedabad as a future sports capital of the country. Next, MSP law. On the 5th anniversary of Delhi border steer, Punjab farmers hold rally demand MSP law. पण जानिथिबे 2020 रे जो कोविड आसितला समय फार्मर्स प्रोटेस्ट चलितला to withdraw those 3 black act. Although that 3 black acts were withdrawn by the Prime Minister of the government, but एमानंकर डिमांड थिला एवं सेति मध्यरु किछ डिमांड भितर गोटे डिमांड थिला एमएसपी को लीगलाइज करबा और एमएसपी को लॉ थ्रू रे आनिबा. एंड व्हाट इज दिस एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस. Farmers from across Punjab gathered Chandigarh to mark the 5th anniversary of the Delhi Chalo movement, which led to a year-long sit on the eventual repeal of the 3 farm laws.
तेणु जेहेतु से धारणा स्ट्राइक रे बसिले प्रोटेस्ट रे बसिले तो तीनोटी फार्म लॉ को विड्रॉ करागला कहा द्वारा ऑर्गेनाइज करा जाइतला संयुक्त किसान मोर्चा इट इंक्लूड्स व्हाट एमएसपी को लीगल गारंटी दिया जाओ दैट मींस एमएसपी को थ्रू एक्ट इंप्लीमेंट करा जाओ द रीजन होची फार्मर्स माननको जदियो गवर्नमेंट अनाउंस करूची एमएसपी बट फार्मर्स माननको एमएसपी मिलू नाही व्हेन दे सेल इट आउटसाइड द मंडीज और मार्केट बाहर जिते से बिकुचंदी और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को बिकुचंदी से समय से एमएसपी प्राइस मिलू नाही सो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न with respect to recovery of the cost of the farmer or the ensuring the income of the farmer तेणु से कहते एमएसपी को लीगलाइज कर दिया जाऊ सो दैट नो फार्मर्स विल गेट लेसर देन द एमएसपी exclusion of agriculture and allied sector from the free trade agreements with other countries free trade agreement रे agriculture allied को हटाई दिया जाऊ कहीं now the free trade agreement रे agriculture allied रहिबो तबे सस्ता good quality products will come to our country then agriculture industry in our country will suffer increase sugar cane जो अपन assurance price 500 some per quintal withdrawal stubble burning cases जो farmers के against करा जाइछि criminal cases ताको withdraw करा जाऊ ओके एवं 2020-21 रे agitation रे जो farmers मान को नारे cases हिछि ताको मध्य ड्रॉप करा जाऊ एवं फार्म लेबर को पई एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया जाऊ कॉन्टेक्स्ट एंड पॉलिसी रिलेवेंस जति अपन देखिबे एमएसपी लीगल गारंटी डिबेट फार्मर्स यूनियन आर्ग्यू एमएसपी इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लोबल वल्नरेबिलिटी या वोलेटिलिटी वायबिलिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ओके तो एक तो कौन हो प्राइस स्टेबिलिटी दैट मीन्स जो मैंने किणिबे से माने एमएसपी रे ही पे करिवे तो प्राइस स्टेबिलिटी रहला प्रोटेक्शन फ्रॉम ग्लोबल वोलेटिलिटी यदि इंटरनेशनल मार्केट रे किछि चेंजेस हुए किछि फरक पकेइबो नाही से माने एमएसपी मिल जो एंड स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स मानकर इनश्योर करा जाई परिबो इनकम गवर्नमेंट कोन कहूची यदि एटा मैंडेटरी कर दिया गला एमएसपी चांसेस अछि कि फिस्कल बर्डन आसीबो कोन भाई ना जदि प्राइवेट सेक्टर न किणे प्रोक्योर न करे की प्रोक्योर करिवो ऑब्वियसली पब्लिक एंड एट व्हाट प्राइस एमएसपी तो एते सरप्लस अमाउंट रो फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार नहीं कि करिवे कोन और जदि करिवे तबे तंगो अधिक प्राइस रे ही किणिबा को पड़िवो जदि हमें लीगलाइज करूचे सो इट्स अ काइंड ऑफ फिस्कल बर्डन रहिबो प्रोक्योरमेंट कैपेसिटी में जेमते कहली एते गुडे जिंस नहीं करिवे कोन जदि आपण देखिबे 2015 रो गोटे सांतनाम कमिटी रिपोर्ट थिला से कहूचे टोटल 6% फार्म प्रोड्यूस रो प्रोडक्ट्स गुडी को प्रोक्योर होउची एमएसपी रे तनो सेटा 2015 रु 25 जदि आपण देखिबे ठीक अछि तारा डबल कर दियंत 12% ओनली बाकी 80% भी एबे भी हो नाही प्रोक्योरमेंट से 88% को से माने कोठी बिकुचंदी ऑब्वियसली ओपन मार्केट रे नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज रे ओके एवं से माने को प्राइस मिलू नहीं डब्ल्यूटीओ ओब्लिगेशन यदि अधिक में एक्सेस सब्सिडी अमाउंट दवा जो डब्ल्यूटीओ जो डी मिनिमस लेवल अपन कर अछि डी मिनिमस लेवल डी मिनिमस कोन ना 6% फॉर द डेवलप्ड कंट्री 10% फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज से भी अपन कर एक्सीड करि जिवो FTAs and agriculture farmers fear FTAs with countries having cheaper agricultural production could undercut Indian farmers तो एमान को अनएम्प्लॉयमेंट देखा जीवो इनफ्लक्स सब्सिडीज इंपोर्ट्स डिप्रेस डोमेस्टिक प्राइसेस ओके डिमांड एक्सक्लूड एग्रीकल्चर फ्रॉम टैरिफ फी कंसेशन तो हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करबा पई हमको एफटीए रे एग्रीकल्चर को ऐड करा जीवा कथा नुहे stubble burning cases criminalization of stubble burning is opposed unions demand incentive for the residual management machinery subsidies and compensation instead of penalties आपने जानी थी stubble burning कोटा जोटा आपनकर एबे देखिबे जोटा हार्वेस्टिंग सीजन ऑलरेडी सरलानी धान कटा जोटा हमें कहूचे whenever the cut the rice paddy straw से माने किछि सेंटीमीटर ऊपर ही सेटा को छाड़ी के काटंदी तो से जो रेसिडुअल गुडी को रहला सेटा को
to prepare the land for the next cycle of crop. ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତି. As a result, that creates a lot of particulate matter and especially in winter. Next देखिए, International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar will assume charge as chairperson of the International IDA for the year 2026, that is International Institute for Democracy and Electoral Assistance. He will take over on December 3 in Stockholm, Sweden, where the organization is headquartered. International IDA has 35 member countries including India. Okay, International Institute for Democracy and Electoral Assistance. What is this International Institute of Democracy and Electoral Assistance? What is it? An intergovernmental organization promoting electoral integrity, democratic governance, political participation and constitutional building across the world. जेहेतु democratically election commission amar hochi, Election Commission of India is the apex body who conducts the election in a democratic, fair and just manner. सीथिपाई ताको ये status दिया जाउची. केवे establish करा जायतिला 1995 रे. हेडक्वार्टर होची स्टॉकहोम, स्वीडन. मेंबर्स को माने 35 countries from all continent. Membership is voluntary. India is an active member. Key activities: research and global democracy indices, electoral processes strengthening, support to election management bodies, democracy assessment. Significant for India. Soft power democratic credential positions India as a leader in the global democratic norms, enhances the Election Commission of India's reputation as a model of election management body. Okay, तो India status increase करेगा, soft power बढ़ेगा, कारण India is considered as the largest democratic country in the world. Strengthen global partnership, electoral EVM and VVPAT, जो टेक्नोलॉजी यूज करा जाउची, वोटर एनरोलमेंट सिस्टम एंड इंक्लूजन प्रैक्टिसेस. इंडिया गेन्स मोर वॉइस इन इंटरनेशनल इलेक्टोरल एंड गवर्नेंस डिबेट. नेक्स्ट देखिबा, रेयर अर्थ मैग्नेट. कैबिनेट अप्रूव्स 7,280 crore scheme for the rare earth magnet. Union Cabinet approved a first of its kind scheme with an outlay of 7,280 crore. Promote domestic manufacturing of sintered rare earth permanent magnets, aimed at securing India's supply chain for critical components used across advanced technologies. Scheme the purpose kon dekhundu, a 6,000 metric ton per annum of integrated REPM manufacturing capacity, that is rare earth material, reduces import dependency and enhance strategic self-reliance. जो सेमीकंडक्टर यूनिट्स आपण देखिथिबे, से सेमीकंडक्टर यूनिट्स रे रेयर अर्थ मटेरियल को यूज करा जाउची. जदि सेटा इजीली आपण मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बूस्ट डेफिनेटली करिवो. ओके, एंड हमरो इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करिवो एंड स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल REPM वैल्यू चेन. Why REPM? कोड देखो यूज होची रेयर अर्थ मैग्नेट्स गुड़िको इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस सिस्टम. इंडिया करेंटली डिपेंड्स हेवीली ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ दिस मैग्नेट्स, सो एबे सेल्फ सफिशिएंट हेई परिबा एवं इंडिजिनसली डेवलप केमती करा जाई परिबो. Implementation structure: 5 beneficiaries selected through global competitive bidding. Each beneficiary can set up to 1,200 metric ton per annum, totaling 6,000 metric ton per annum. Scheme duration: 2-year gestation period of land setup, 5-year incentive dispersal phase. Strategic concept: comes days after India Canada talks on critical minerals under SEPA resumed.
Canada is a major rare earth and critical mineral supplier. India seeks diversification of supply chain. Okay, तो इंडिया कैनेडा भी बर्तमान एक्सप्लोर आम करूँ पार्टनरशिप सो दैट आमर इंपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल को डाइवर्सिफाई करने. MCQs. Which of the following bodies primarily recommends names of the appointment judges of the Supreme Court, National Judicial Appointment Commission, and here Supreme Court Collegium system? The power of the President to appoint judges to the Supreme Court is exercised under which article? Article 124. Passive euthanasia in India was legally recognized by the Supreme Court in which landmark case, that is Common Cause versus Union of India. International IDEA is headquartered in Stockholm. Rare earth material or magnet, permanent magnet, are crucial for all of the following except electric vehicle, wind turbine, nuclear fusion reactor, precision defense system. न्यूक्लियर रे यूज हुए नहीं. तो ये हूँ दुईटी मेन्स रो क्वेश्चन एटा लिखा चेष्टा करेंगे. एंड बर्तमान अचीवर सेल चली जो मैंने चाहते फाउंडेशन कोर्स को किणवाई से फाउंडेशन कोर्स किनीपर कोड यूज करेंगे JN लाइव. कोड यूज करेंगे JN लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. या भी डिस्काउंट मिल जाए. सेमती इंग्लिश एंड ओडिया भी अच्छी JN लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट आपन को मिल जाए. अचीवर सेल PDF आपन को टेलीग्राम रे मिल जाए. थैंक यू.